Okay, up till now we have discussed about the excretory organ, that is the liver and its function. First, just we have gone through with the recap. Okay, now the liver. As far as liver is concerned, in case of excretion, it excretes excess amino acids into urea and uric acid. Uric acid. These two are the base product or the end product of the broken down form of amino acids. ठीक है, ये दो जो हैं ये amino acids की broken down form है, और usually the amino acids which are excess in the body are being broken down by the liver. Apart from this, dead RBCs are broken down into bile salts or bile juice and bilirubin. It's also a form of a bile, plus uric acid. Okay, in other words, the bile juice is nothing but the bilirubin. Okay, and the excess bilirubin is excreted out through the kidney, and the required one, that is the bile juice which is required, or bilirubin which is required in the digestion, is stored in the gallbladder. Okay, another breakdown of the liver is the different toxin metabolites. Toxin metabolites like hydrogen peroxide, H2O2, into water and oxygen by the help of enzyme catalase. Okay, catalase is a form of the enzyme that is actually the peroxidase type of enzyme, which is also found in certain bacteria too. When we do the anaerobic respiration, they secrete out that catalase type of enzyme in the form of which name is peroxidase. Okay. Now here is this is the some few what can I say functions as an excretory organ present in the liver. Okay, liver as a excretory organ. अगर हम बात करते हैं कि लिवर एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या कर सकता है, तो उसमें ये कुछ जो 3 प्रोसेस हैं, ये मेजर प्रोसेसेस हैं, और ये लिवर जो होता है ये कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर कर रहा होता है. अच्छा, इसके अलावा हमने एक और एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़ा था, इनफैक्ट लंग्स, जिसको हम एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे भी कंसिडर करते हैं, और इसमें बेसिकली लंग्स जो होते हैं वो गैशियस एक्सक्रीशन करते हैं. गैशियस एक्सचेंज में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट्स कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हैं. How? That means in the alveoli structure we have discussed in our previous class when we were studying about the respiration, the alice of the alveoli, which is internal layer, which is the moist layer, and the on around the alveoli जो blood capillaries जो होती है उनका नेटवर्क चल रहा होता है. ठीक है, they have also got the intracellular spaces, and here the arterioles and here is the venules. They interconnect with each other. ठीक है. अच्छा, इन सब के अंदर ब्लड जो होता है वो रन कर रहा होता है, ब्लड सेल्स रन कर रहे होते हैं. I'm making it with the red color. These are the blood cells. How the excretion of carbon dioxide takes place through the lungs, a little bit revision or little bit review I'm giving you. ठीक है.
ये ब्लड सेल्स हैं और इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। कहीं कम और कहीं इधर इधर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा होगी, इधर थोड़ी कम होते 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 बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ओके, देयर इज अ इंटरसेल्युलर स्पेसेस इन बिटवीन द alveoli because it's a single cell structure, a single cell tissue there. It has got spaces, so the material can easily be exchanged. Okay, the inside layer is the moist layer. That means moist and cool layer. That is, water is present. Somehow moist and cool layer. Temperature is very low inside the alveoli. Now first we do the labeling. This one is the arteriole, small blood capillary of arterial nature. Venule, smallest form of the vein. This one is the alveoli. Air sac, that is air sac. Okay. अच्छा, अब होगा ये कि how the carbon dioxide comes out. Actually, carbon dioxide present in the blood plasma. Blood plasma, liquid in which blood cells plus other dissolved substances present. Okay. Okay. Acha. In that blood plasma, carbon dioxide is present. But carbon dioxide in blood plasma, it is present in the form of bicarbonates, HCO3 minus 1, in the form of bicarbonates. And eventually, when it reacts with water, it will give rise to the weak acid that is called the carbonic acid, H2CO3. Okay, that is the carbonic acid. It is the weak acid. So, in the blood, inside the blood, carbon dioxide is present in a dissolved form, that is the bicarbonates, in the form of a bicarbonates. What happens from the high concentration gradients of the bicarbonates, that is, which is present in the venule के अंदर high concentration है bicarbonates की, HCO3 की, carbon dioxide की, it starts comes out from the intracellular spaces and passes from the intracellular spaces to the alveoli, inside the alveoli. Where inside the alveoli, what will happen? The bicarbonates, hydrogen is being separated, हाइड्रोजन सेपरेट हो जाती है और मॉइस्ट कूल लेयर में जो वाटर होता है उसके साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर देती है, जो कि वेपर्स बना देता है, वाटर वेपर्स बनाता है, that are also being exhaled out through the lungs, and also the carbon dioxide is free now in a gaseous state. और ये भी जो होती है ये एल्वेलाई से बाहर आ जाती है. सो दो चीजें बाहर आती हैं लंग्स से की एल्वेलाई से. एक तो आता है वाटर वेपर, ठीक है, और एक आती है जनाब कार्बन डाइऑक्साइड. सो दैट्स हाउ द एक्सक्रीशन थ्रू द लंग्स टेक्स प्लेस. ओके, एंड now kidneys as the excretory organs. Kidneys are also called, we can also call them the strainers or filters of the body. Filters of the body. Okay. First of all, the location of the kidney.
The two kidneys are present just above the waistline of the body. Okay, just above the waistline of the body. And they are in two numbers, okay? And or we can say they are in pair form. In pair form, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है कि लेफ्ट किडनी is slightly higher or more towards interior side of the body as compared to left, sorry, as compared to right. Okay. How the kidney looks like? General structure of kidney. The left kidney is slightly higher or uplift, whereas the right kidney is slightly lower than the left one. इतनी ज्यादा नीचे नहीं होती है जितने की मतलब होते हैं, मतलब थोड़ी सी ये ऊंची होती है उससे. Okay, and the aorta that comes from the heart joined to the kidney and then again goes downward. When it's joined to the kidney or goes into the kidney, it will call the renal artery. Whereas vena cava that comes from the lower portion of the body, when joins to the kidney, this one is the vena cava that comes, inferior vena cava that comes from the lower part of the body. When it joins the kidney, it will call the renal vein, and then again it is converted into superior vena cava, or again the proceeding part of the inferior vena cava. In both kidney, the renal artery and renal vein are present. Okay. Okay. From both the kidneys, a tube-like structure is originated that goes downward and join the bag-like structure that is called the urinary bladder. These tube-like structures are called the ureter.
These two tubes are called the ureter and they join the bag-like structure called the urinary bladder. The urinary bladder ends at the small opening called the ureter. Now I'm going to label it. Aorta, inferior vena cava, left kidney, right kidney. This depression in each kidney is called the hilus, and the tubes, both the tubes are called the ureter, and this bag-like structure is called the urinary bladder. Okay, and this one, these are the sphincter muscles that controls the urine when to pass and when to not. Sphincter muscles, and the small opening is called the urethra. Okay, now this is the general structure of the kidney. So, where are the renal artery and the renal vein? Here is the renal artery, and here is the renal vein. Okay, now the LS of the kidney. LS of the kidney. As far as the LS of kidney is concerned, I'm going to draw it and complete it, then let you know. People know that how it works. Okay. So this is the LS of kidney, bean-shaped structure, thick muscular wall. Okay. And it is divided into two major parts, that is the cortex and medulla. And the cortex has got the different structures inside it, and medulla has got the different structure inside it. The pyramid shape which I am drawing right now, जो मैं अभी बना रही हूँ, this portion inside the pyramid is called the medulla. इसके अंदर जो वाला portion है इस pyramid के जो triangle shape का जो structure ये मैं बना रही हूँ, इसके अंदर वाला जो structure है वो कहलाता है medulla. ओके, और बाहर का जो structure है वो कहलाता है cortex. ठीक है, और फिर उसके बाद this one. And the number of pyramids is usually 5 to 6. These are the pyramids. Okay. And as per the structure which we studied before, it has got renal artery, which is the red one. ठीक है, रेड कलर की होती है, इसके अंदर ये एंटर हो रही है जो मैं बना रही हूँ इस वक्त. ओके, एंड
The next one is the renal vein. Okay, Hmm. so this is the renal vein, which brings the deoxygenated blood as well as the that takes away the deoxygenated blood, not brings the deoxygenated blood. Deoxygenated but pure blood. Okay, so I will I'm giving the outline to these two vessels, blood vessels. ओके, अच्छा अब देखो होता क्या है कि ये जो, इसको मैं लेबल कर देती हूँ पहले, ये है रीनल आर्टरी, ठीक है, इसमें क्या होता है ये भी बताती हूँ अभी, और ये है रीनल वेन, ठीक है। अब ये जो रीनल आर्टरी है ना, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है ये सुनो, देखो रीनल आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन होती है, जो ब्लड आ रहा होता है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, ठीक है, और एक्सेस मिनरल सॉल्ट्स होते हैं जो कि वेस्ट होते हैं। अच्छा, और इसके अलावा इसके अंदर होता है एक्सेस वाटर, ठीक है। ये सब कुछ किसके अंदर होता है, ये सब कुछ होता है रीनल आर्टरी के अंदर, किसमें होता है, रीनल आर्टरी। अच्छा भाई, सिर्फ अच्छी चीज इसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। अच्छा, ऑक्सीजन जो होती है वो कहाँ से आ रही होती है, वो ऑक्सीजन जो आ रही होती है वो आपकी इसमें शामिल होकर आ रही होती है लंग्स से, ठीक है। जबकि यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस मिनरल सॉल्ट्स और वेस्ट मटेरियल, जितने भी वेस्ट मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये सारे के सारे शामिल कर दिए जाते हैं लिवर की तरफ से, ठीक है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये सब पढ़ा था कि हाउ इट कम्स एंटर्स फ्रॉम द वेना केवा टू द एओर्टा, ऑल दीज वेस्ट मटेरियल्स, ओके। अच्छा, अब बात आती है रीनल वेन की, कि इसके अंदर क्या क्या होता है। एक्चुअली रीनल वेन की जो डायरेक्शन है ब्लड को लेके जाने की, वो है इस तरफ बाहर निकलने की, और रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड अंदर लेके आएगी। तो जाहिर है जब वो अंदर लेके आएगी तो वेस्ट मटेरियल ही लेके जाएगी, कॉमन सेंस की बात है। और बाहर जब जाएगी तो जिसे कहा जाए कि सारे वेस्ट मटेरियल जो मेटाबोलाइट्स हैं उनको साफ करती हुई बाहर निकलेगी। माइंडेड वन थिंग दैट गैसेस जो होती हैं उनके वेस्ट मटेरियल्स को किडनी में साफ नहीं किया जाता। जो वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का होता है वो इसमें से लेके जाया जा रहा होता है, क्योंकि ये सेल जो है ये भी रेस्पायर कर रहे होते हैं। तो इनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वेन में शामिल होती है, लेकिन प्योरीफाइड ब्लड भी साथ में शामिल होता है। यानी यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस मिनरल सॉल्ट्स एंड एक्सेस वाटर, ये सारी चीजें जो होती हैं ये सब यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाती हैं, और प्योर वाटर, प्योर ब्लड जो होता है वो वेन के अंदर मौजूद होता है, बट डीऑक्सीजनेटेड होता है। यहाँ रीनल आर्टरी में जो आ रहा होता है वो ऑक्सीजनेटेड तो होता है, ऑक्सीजन बहुत होती है, लेकिन इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड कैसा होता है, जिसके अंदर वेस्ट मटीरियल होता है। अब रीनल वेन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो भी देखो। देखो रीनल वेन के अंदर सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि रेस्पिरेशन की वजह से, इसकी सोर्स क्या होती है, टिश्यू रेस्पिरेशन, किडनी टिश्यू रेस्पिरेशन, किडनी टिश्यू, किडनी टिश्यू रेस्पिरेशन, ठीक है, किडनी टिश्यू रेस्पिरेशन की वजह से। अच्छा, और क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, इसके अंदर प्योर ब्लड होता है, प्योरिफाइड ब्लड होता है, ठीक है, प्योरिफाइड ब्लड होता है, यानी कि सब कुछ जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा का सारा साफ हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद अब हम देख लेते हैं और स्ट्रक्चर्स को भी। अब देखो ये जो रीनल आर्टरी है जब इसके अंदर एंटर होगी, देखो ये जो है ये थिक वॉल स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड द रीनल कैप्सूल। इसको रीनल कैप्सूल भी कहते हैं, और या जैसे कहा जाए किडनी के आउटर मस्कुलर थिक लेयर भी कहते हैं।
इसके बाद ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये जो पिरामिड शेप जो है बने हुए जो हैं, दीज आर कॉल्ड दी रीनल मेड्यूला, रीनल मेड्यूला, ओके। अच्छा, ये होते हैं रीनल मेड्यूला। अच्छा, ये वाली जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड दी हाइलस, ये हाइलस वाला पोर्शन है, ठीक है, डिप्रेशन वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है। ये किडनी में जो डिप्रेशन क्रिएट हो रहा होता है, ये वाला जो पोर्शन है पीछे वाला, इसको हम कहेंगे हाइलस, ये है हाइलस, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड दी रीनल पेल्विस, ठीक है। और ये जो ट्यूब है ये कहलाती है यूरेटर, यूरेटर, ओके। अच्छा, अब इसका और मजीद डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो है that means the renal artery when gets entered into the renal cortex and the renal vein when it's form the structure inside the kidney and move it outside the kidney, they forms a very thin fine capillary structure inside the renal cortex. Renal artery और renal vein जो होती है दोनों की दोनों बारीक बारीक blood capillaries की फॉर्म में स्ट्रक्चर फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, ओके। इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करने से पहले मैं जो हूँ बाउमिन कैप्सूल बनाऊंगी, ठीक है, और वो है फिल्ट्रेट ऑर्गन, ठीक है। तो मैं एक यहाँ बना देती हूँ और एक यहाँ बना, बाउमिन कैप्सूल दैट इज द नेफ्रॉन, ये फिल्ट्रेशन करने का बेसिक टिश्यू ऑर्गन है, ठीक है, टिश्यू है ये एक तरह से। And it gets open into the renal pelvis. First convoluted tubule and second convoluted tubule as 5090 on 0610 का जो कोर्स है हमारा CIS का, उसके अंदर इसके स्ट्रक्चर की डिटेल और इसकी फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोर्स में इंक्लूड नहीं है, दैट्स वाई हम इसको नहीं पढ़ेंगे, बट स्टिल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ लिटिल बिट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट के इट क्लियर द कंसेप्ट, ठीक है। ये जो होते हैं ये तो मैंने बहुत बड़ा बनाया है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी बना के दिखा देती हूँ। कप शेप लाइक होता है बाउमिन कैप्सूल, ठीक है। और इसके बाद इसमें होल्डिंग्स होती हैं एंड दिस गोज डाउन, ये सब मेड्यूला के अंदर होता है, लूप ऑफ एन फॉर्म करता है और जैसे ही ये ऊपर आता है फिर दोबारा इसके अंदर जो है होल्डिंग्स बनती हैं एंड देन अगेन इट गोज डाउन टू फॉर्म द ट्यूब्यूल, ओके, like this, and it's a tube-like structure, ठीक है, and from here the tubule is formed, okay. So that's how the structure of nephron is present in the kidney. So these structures are very minute structures and they are not that much big which I have drawn in the kidney, ठीक है, इतने ज्यादा वैसे नहीं होते, ये इतने बड़े बड़े होते भी नहीं है, ये बहुत बारीक बारीक होते हैं, बहुत बारीक बारीक, ठीक है। और ये करोड़ों की तादाद में होते हैं, लातादाद होते हैं, ओके, लाइक दिस, दीज आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये ट्यूब्स होती हैं और इनके साथ एक्सटेंशन भी बहुत सारी लगी हुई होती है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन द रीनल आर्टरी gets entered and forms the blood capillaries,
तो ये बारीक बारीक ब्लड कैपिलरीज रीनल कॉर्टेक्स के अंदर डिवाइड होना शुरू हो जाती है। तो याद रहे कि रीनल मेड्यूला में नहीं, क्योंकि रीनल मेड्यूला टोटल जो है वो फिल अप हुआ होता है किससे, जिसे कहा जाए कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर से। ओके, यस, सो दे they get entered, these blood capillaries get entered into the Bowman capsule and then form the network over here for the filtration. Okay, so these blood capillaries go from one place to another and fill the Bowman capsule and comes outside to form the, so the whole kidney cortex is filled with thin blood capillaries and veins. Okay, these blood capillaries are like this. They first surround the medulla. Okay, then they start branching themselves. Okay, फिर ये अपने आप को क्या करती हैं, ब्रांच करना शुरू कर देती हैं। ये इसको सराउंड की हुई होती है। इसी तरीके से ये सब जगह सराउंडिंग्स होती हैं। ओके, दे सराउंड द मेडुला एंड सेम इज केस विद द रीनल वेन। ठीक है, रीनल वेन्स जो होती हैं जब वो वेन्यूल के अंदर फॉर्म होती है, देन हाउ दे फॉर्म लाइक दिस। ये इसके अंदर जब एंटर होगी तो फर्स्ट ये क्या करेगी कि ये इसके गिर्द जो है स्ट्रक्चर अपना, जैसे कहा जाए बारीक सी रीनल ब्लड कैपिलरी जो है वो फॉर्म करेगी। मेड्यूला को सराउंड जरूर करेंगी बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड विद द बाउमिन कैप्सूल। ठीक है, इस तरह करके। सो ये इसके ऊपर भी अंदर आ रही होती है। ओके, अच्छा, और ये जो है ना, ये इसके साथ होती है और इसी तरीके से ये इसके ऊपर होती है। और ये ना सिर्फ इधर होती है बल्कि ये कॉर्टेक्स के अंदर भी जा रही होती है। everywhere blood capillaries are there. Okay, like this. Okay, and from here they form the network around the medulla, around the Bowman capsules, inside the cortex. So there is a heavy proceedings and branchings of the blood capillaries, both the venules and the arterioles. Okay, like this. The whole kidney is filled with a capillary network. So that's how the filtration and ultrafiltration process takes place in the Bowman capsule. Now I'm going to label it also. And this one is the nephron. Okay, and here the filtration and ultrafiltration of the blood takes place, and all the metabolites that have been sent by the liver into the blood for the filtration, for the removal, kidney collect it in the Bowman capsule, and I must say that they filter it out. Okay, so this one is the Bowman capsule. ठीक है, एंड इसके अंदर क्या होती है, वही ब्लड कैपिलरीज होती है। ठीक है, और ये इसके अंदर एंटर हो रही होती है और फिर उसके बाद इस तरह ये इसके ऊपर दे विल फॉर्म द नेटवर्क। सेम एज केस विद दैट ऑफ आर्टरियल्स। ठीक है, जो कि यहाँ से इधर से जा रही होती है बाहर। ये बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से हो रही होती है, ये भी, और दे आर इंटरकनेक्टेड विद देम बिकॉज human beings have the closed blood circulatory system. Arteries are connected with the veins and veins are connected with the arteries. So let's have some little bit labeling of this structure of nephron. This one is the Bowman capsule. Bowman capsule. Okay, and this one is the loop of Henle. Loop of Henle, and this one is the
collecting duct. Collecting duct. Here it is a collecting duct, and all the urine is going to be collected here in the pelvis and then go down for the filtration. Okay, for the removal, sorry. So that's how the process of filtration takes place inside the kidney. And basically, we haven't discussed the actual process of filtration. We will discuss it in the next class. And till now, we have discussed how the kidney looks like inside. That is the longitudinal. We take the longitudinal section of the kidney and how the blood capillaries are formed and where are the nephrons and where are the filtration takes place and where is the urine collection takes place and from where it is going to be excreted out, as well as the location of the kidney, as well as the shape of the kidney. And we have studied about the renal artery and renal vein and their contents and so on. So by this we have completed the structure, internal and external, of the kidney as an excretory organ.